Hello and welcome. We are here at this conference at a time when India Inc. is in mourning after the untimely demise of Mr. Cyrus Mistry. And we have the country's road and transport minister and a man whose principal passion has been to improve infrastructure, roadways across the country. There is a lot that has been done over the last 8 years, and yet there are challenges that remain. Where does physical infrastructure go from here to be able to achieve the dreams laid out by this government? And what can we do to try and reduce road accidents, ensure that people are able to use the highways that have been built? And what is the vision that can be laid out to try and drive India's growth from where we've reached, surpassing the United Kingdom, to where we should be, really right next to where China and the United States are? Can I request all of you to join me in welcoming to this IAA conference one of the most dynamic ministers in the Narendra Modi government, the Minister for Road Transport and Highways in the Government of India, Mr. Nitin Gadkari. Gadkari ji, welcome, and it's great to have you with us. Thank you. At this time across the country, people are thinking about what happened with Mr. Cyrus Mistry in that Mercedes-Benz. Despite the fact that they were on a good highway in one of the most sophisticated automobiles in the world, the passengers in the rear end up dead. I want to use this as a starting point for this conversation as we look at physical infrastructure in our country to get you to talk about what you think went wrong, what do you think should be done to ensure that we can reduce the number of road accidents in our country. Actually, the accident of Cyrus Mistry is really very unfortunate, and he was a very good friend of me. And really it is a great shock to the country. Our problem is that every year in our country we have 5 lakhs accidents and 1,50,000 deaths. And out of which 65% death belongs to age of 18 to 34. It's very unfortunate. The majority thing where we are working on the 4 E's. One is automobile engineering, road engineering, education, and the most important, the implementation of the law. Now the problem in our country is we need cooperation from media and from the society. Regarding the rules of the road, there are also a lot of problems because without cooperation of the people, we cannot make it effectively. Today, this Ahmedabad-Mumbai highway is very dangerous highway. Actually, when I was minister in Mumbai, I have completed the work of that highway. Actually, the present PCUs is more than 1,25,000. Actually, we have just started to thinking a new vision. For I'm giving the example that we are making in Mumbai and Pune, and in Chennai, making the flyover 3 layer. 1 layer, ground level 8-lane road, then 6-lane flyover, then 6-lane flyover, and then metro. Even first we have started in Nagpur also, that is the 6-lane road, 6-lane flyover, and then metro. So because of as far as after 20,000 PCUs, we need to develop 6-lane road. But the traffic PCUs is 1,25,000, it's very high. Now we have already started the work of Mumbai-Pune Express Highway, Mumbai-Delhi Express Highway. 70% of the work is completed. It is totally a new alignment by which we will reduce the traffic density on this road. Unfortunately, we have taken a lot of decisions regarding automobile engineering. For economic model also now it is mandatory to make 6 airbags. We are in process to make the law for that. At the same time, regarding road engineering, we have taken a lot of decisions changing the law, that how it can be safe for the people. And the most important thing regarding education, we are doing a lot of campaigns, particularly celebrities, good people, they are cooperating us. Because to create awareness in the mind of the people is very important. And my target is to reduce the 50% accident death
of the country before end of 24. It is a very difficult task. And I publicly admitted that this is the only negative point in my ministry where we are expecting a lot of success in it, but still we are not in a good position. Because every time we need to increase the road network in India. You just understand, we are the second largest road network in the world. We have 56 lakh kilometers of high roads, out of which only 2% national highway. And now we are trying to, that was only 96,000 kilometers when I taken charge as a minister. So I increased it up to 1,47,000 kilometers. And now we want to make it 2 lakh, by which 2 lakh kilometers, 60 to 65 to 70% of traffic will be on national highway. And that's the reason that we are making 26 green highways. Only for Delhi, we are making the project of 60,000 crore. All projects are already going on. So all the metro cities, we need ring road. The Bangalore is a big problem. They don't have ring road. The traffic jam is there. And that is one of the reasons that as far as the automobile growth and population growth is increased, that is nothing is in our hand, because both number is increased. We need to increase road network, and we need to think about road safety regarding the automobile engineering and particularly the road engineering. One thing is very important where we are facing the problem, the DPR of the roads are defective. So we have taken a lot of strict actions now. We are taking a lot of decisions related with the curves, and we are now identifying black spots. When I was minister in Maharashtra, I am giving the example, from Pune to Kolhapur, there is one Jaisinghpur bypass. On one spot, there was 150 deaths in the road accident. So as a minister, I appointed a committee named as Apaghat Nivaran Samiti. Apaghat means Marathi mein in accidents ko Apaghat kehte the. Apaghat Nivaran Samiti. And Mr. Tambe, the previous PW Secretary, was the chairman. And they identified 2,500 black spot. Now in my ministry also we identify black spot in first phase 3,500. We have rectified majority. But still the black spots number is increased. So we are trying to implement and giving priority for rectification of black spots. That is one thing. Then we are making lot of changes in DPR as far as the road engineering concern. Regarding automobile engineering, our lot of companies are exporting their models from India. They have taken 6 airbags. So let's deal with that. क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स को रोकने का एक तरीका है कि एयरबैग्स हों. आप चाहते हैं कि रेयर सीट्स पे भी एयरबैग्स हों, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, खासतौर से जो लो एंड कार्स बनाती हैं, सस्ती गाड़ियां बनाती हैं, वो कह रही हैं कि इससे कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी. एक तरफ ह्यूमन सेफ्टी है कि आपको लोगों की जान बचानी है, रोड एक्सीडेंट करना है, और दूसरी कंपनियों को ये लग रहा है कि इससे कीमतें बढ़ जाएंगी और लो एंड कार्स फिर कोई खरीदेगा नहीं. ये बात बराबर नहीं. देखिए, ये सेम कंपनी जब अपनी कार एक्सपोर्ट करती है इंडिया से, तब 6 एयरबैग लगाती है, और हमारे यहाँ तैयार करती तो 4 लगाती है. क्या हमारे गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? ये मैं उनके आर्गुमेंट से मैंने आपको एक अच्छी बात बताता हूं. ये एयरबैग्स की टेक्नोलॉजी में जो मैन्युफैक्चरर है उनको मैंने बुलाया, और पहले मुझे पता चला कि इससे कॉस्ट कितनी बढ़ती है. कितनी बढ़ती है? कुछ नहीं. एक्चुअली अगर वो नंबर बढ़ेगा तो ये 4 से जो है, ये एक एयरबैग की कीमत 900 रुपए के अंदर आएगी बस. हाँ, मैं तो पढ़ा था 50-60 हजार रुपए बढ़ जाएगी. नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं ज्यादा. जब नंबर बढ़ जाता है वो कम हो जाएगी. पर क्या होता है कि मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मैंने कहा ऐसा मत करो, लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं. मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है, 4 जगह पैर टूटा था. तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता. तो ये चर्चा चल रही कि अक्टूबर से ये जो एयरबैग्स हैं, खासतौर से रेड सीट्स पे, क्या आप उनको कंपलसरी करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे, होगा, नहीं होगा? ऑलरेडी इट इज इन द प्रोसेस. कुछ अप्रूवल्स हमको चाहिए, उसके लिए लगा हुआ है. क्योंकि ये जो साइरस मिस्ट्री जी की डेथ हुई, उसके बाद ये मामला पूरा एक बार फिर से आ गया, तो आप अभी उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं? आप कह रहे हैं. देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग रोड सेफ्टी, और जो कुछ स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे.
और हम लोग यही कहेंगे कि बिल्कुल हमको जान बचाना है लोगों की, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बात बता दो आपको, टोटल 3.2% जीडीपी का नुकसान रोड एक्सीडेंट के कारण हो रहा है। ये कितना बड़ा नुकसान है। और 3-3 लाख लोग हाथ पैर टूट जाता है, बेचारे उनका लाइफ खराब हो जाता है, वो कितना बड़ा नुकसान है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, किसी का यंग लड़का है, आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का है, उसके पैर टूट जाते हैं। देखो ये कॉम्प्रोमाइज का विषय ही नहीं होता। हमें लोगों की जान बचाना इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। और मुझे इस बात को स्वीकार करने में दुख नहीं है कि मैं 7 साल से मंत्री हूं, सब चीजों में हम लोग सक्सेस हो गए, पर अभी भी मुझे इस बात का दुख है कि रोड सेफ्टी और रोड एक्सीडेंट्स और डेथ में हम जितना अच्छा काम करना चाहिए उतना नहीं कर पाए, इसका दुख है। एयरबैग्स के अलावा दूसरा बड़ा इशू है रेयर सीट बेल्ट्स का। मेरे को नहीं मालूम कितने लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं उनको मालूम है कि हिंदुस्तान का जो नया मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसके हिसाब से पीछे जो बैठा है शख्स उसको भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। आप ये बात छोड़ दो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स उसको इन्फोर्स नहीं कर रहे। मैं आपको नई बात बताता हूं, नाम मत पूछना। मैं अभी 4 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ गया था ये 1 साल में। तो उनके गाड़ी में बैठा, मैं सामने बैठता हूं, तो सामने बैठते पर मेरे को आदत लगी कि मैं लगाता हूं, तो उसने पहले ही वहां आवाज आता है टैप टैप, तो वहां पहले क्लिप लगा के रखी थी। तो मैंने ड्राइवर को डांटा, ये 4 मुख्यमंत्रियों की गाड़ी की बात कर रहा हूं मैं कॉमन आदमी की नहीं कर रहा हूं। मैंने निकालो ये कहां बेल्ट का है? बोले सब पीछे लटका के रखा। मतलब क्यों लटकाया? निकालो, तब तक गाड़ी नहीं चालू करना। फिर मैंने लटका कर घुमाकर वो लगाया। तो ऐसी क्लिप मिलती है मार्केट में, और आप जैसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग वो आवाज न बजे इसलिए क्लिप लगा देते हैं और बेल्ट नहीं लगाते। अब ये हियर वी नीड कोऑपरेशन ऑफ पीपल। अब मैंने नियम बना लिया कि नहीं, अब वो कैमरे में आएगा कि तुमने बैग नहीं लगाया बेल्ट, तुमको फाइन होगा। तो समटाइम आप मीडिया के लोग भी इसको करिए कि भाई बेल्ट लगाना ही है। अब ये स्थिति अगर मैं 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के गाड़ी में बैठकर वो क्लिप लगी थी, अब मैंने वो क्लिप पर बंदी लगी। चारों में क्लिप लगी थी? चारों के सीएम्स के। तो मैंने अभी उसके ऊपर भी ऑर्डर निकाला है कि ऐसी क्लिप मैन्युफैक्चरिंग करना, लगाना गुनाह होगा, उसके ऊपर अभी ऑर्डर निकाला है। ये दिस इज द प्रॉब्लम। हियर वी नीड कोऑपरेशन फ्रॉम द पीपल। ये सब लोग, अभी काफी लोगों के यहाँ, अब यहाँ बैठे हुए लोग भी होंगे ना, तो इनकी अच्छी गाड़ी होगी और वो ड्राइवर के पास एक क्लिप होगी, वो सामने वाला लगाता है, आवाज आता है तो वो बराबर क्लिप लगा देता है। यहां भी कोई बताएगा आपको, ऐसा मत करिए। No, because you've been pushing for the idea that the people sitting at the back must also have a rear seat belt. But most people sitting here, frankly, would not bother with rear seat belts. In United States and Europe and elsewhere, it's pretty common. But in India, that culture is not there. There is already apprehension in the mind of the people that the back seater, they are not supposed to take the belt. That is to be the problem. I don't want to make any comments on any accident. पर पीछे बैठने वाले लोग लगाते ही नहीं, उनको लगता है कि सामने वाले ने लगाना चाहिए। हमारा वास्तविक पीछे और सामने दोनों ने भी लगाना चाहिए। So how do you create that? Because right now we have a dichotomy. On the one side, as far as infrastructure is concerned, you've built massive super highways where earlier I used to go kayaking and rafting in Rishikesh. It used to take 7-8 hours. Now you can get there in 3.5, 4 hours. But sensibility and the ecosystem around those highways hasn't changed. So you've got the physical infrastructure, but the mental conditioning that is required for those roadways, to what extent do you think that is in place? Actually, we are taking help from media. I just met with Amitabh Bachchan ji. He is now our brand ambassador. Akshay Kumar, every time making free of charge advertisement for us. We are talking with the cricketers, players. We are making program in universities, education institutions with the cooperation of NGOs. We have a road safety week. We are doing a lot of programs we are doing. And some of the media also, they are doing excellent job. They are making a lot of programs. But now the mindset of the common man, it is the time for the country that we need to change that. एक बहुत अच्छी बात है, कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं। ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम, मैं स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी इलेक्शन में मुझे अच्छा नहीं लगता आपको ये बताने में, पर वो हम लोग इलेक्शन लड़ते थे तो 4 लोग बैठे थे स्कूटर पर। तो वो विजय सुपर एक स्कूटर आई थी, एक दोस्त की थी, और चौथे को बोलते थे नंबर प्लेट पे हाथ लग। वो पीछे ऐसा हाथ लगा तो स्कूटर चौक से जाती थी, क्योंकि पुलिस काउंट नहीं करता था।
क्योंकि हमें कभी इसका इंपॉर्टेंस ही समझ में नहीं आया कि ये कितना डेंजरस है। नाउ लोगों का माइंड सेटअप बदलना कि नहीं, मैं ये ऐसे ही ये नियम का पालन करूंगा। अब वो हमने ये चालू किया, अभी ये वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट पे वगैरह कैमरे लगे, मुझे 3 बार फाइन हुआ मेरे गाड़ी को। आप ओवर स्पीड कर रहे थे? नहीं, मैं रहता नहीं, पर मेरे नाम की गाड़ी मुंबई में है, मेरा वर्ली में फ्लैट है, तो ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई होगी तो मेरे घर में मेरे नाम से फाइन आया। अब कुछ जगह पर लोगों को थोड़ा अवेयरनेस है, उसके हम अभी 8-9 तारीख को बेंगलोर में कॉन्फ्रेंस है, हम वो 4 लेन के लिए एक्सिस कंट्रोल के लिए कितनी स्पीड हो, 6 लेन लिए कितनी हो, उसके ऊपर में कितनी हो, थोड़े स्पीड भी बढ़ा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम ये है कि रोड अच्छा बना और स्पीड का नियम 60 किलोमीटर का है, तो लोगों को चालान आ रही है। तो हम सभी स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ मिलकर, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो उनकी सलाह से हम लोग उसके लिए No, but this is the big challenge. When you drive, for example, from Delhi to Agra, for example, that road can easily take cars which go at 200, 250 kilometers per hour. And that's the way the road is made. Legally, that is not allowed. So you now have a situation where you've created roads like the US, China, Europe, where you can go at reasonable pace, even if you're not overspeeding. But by Indian standards and conditions, that is gross overspeeding. So how do you deal with that, this dichotomy? Actually, in Delhi-Mumbai Express Highway, I have taken a trial. Just I take the tea into the cup, and the speed was 180 kilometers per hour. आप गाड़ी में बैठे थे? हाँ, मैं टेस्ट 180 पे? That is that मैं बोला, I want to test it in the way when the speed will be 180 kilometers. और मैंने बिल्कुल शांति से पिया, तो मैंने कहा road is good. Even I give the example when I construct Mumbai-Pune Express Highway. Ajit Gulabchand was the contractor, SCC. Haan. So with his Mercedes car, we take the speed of something 120 or 40 kilometers. और at that time I taken tea. मैंने उनको कहा था कि मेरा चाय गिर गया तो याद रखना, तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो वो पूरी ट्रायल मैंने पूरी की। तो अभी there are some roads, they are qualifying for good speed, but we don't want to take it up to 200. We will take maximum speed 140 kilometers. Though it is designed for 200 kilometers, we will not go for that. But this is a subject in concurrent list. We need to take the approval from the state government. So in an agenda, we are discussing this issue with all stakeholders, state governments, and then we will fix up the schemes. And then we will... So what is the feedback that you're getting so far from the states when it comes to trying to increase speed limits? Actually, it is depending upon the road quality. Now, for a reason, we are making Delhi-Jaipur new road. It will be 2 hours from Delhi to Jaipur. This Sona. From Sona we have Delhi-Mumbai Express Highway, and then there will be road for Jaipur. So that speed we can take it up to 140 kilometers. But the old road, that is Gurgaon, and this road, their speed should not be more than 100 kilometers, somewhere 120 kilometers. Because the road is old. The new axis controlled 12-lane express highway speed will be different. The 6-lane road axis controlled speed will be different. Then for 4-lane road, speed will be different. For 2-lane pure shoulder, speed will be different. From road to road, we have to fix up the thing. And by technically considering all the factors, we will finalize that. So we've spoken about road safety, but I want to zoom out a little bit to talk about physical infrastructure and the road for the Indian economy from here on. In 2007-2008, annually we were building about 1,682 kilometers of roads. You've taken that up beyond 13,000 kilometers when data was last published annually. That's a big number. Given that you've been able to build many more kilometers of roadways than earlier, what, Gadkari ji, is your vision from here in terms of building out this infrastructure? Actually, we are now making 26 green express highway. Green means totally new alignment. Now, for example, we are making new road from Delhi to Katra. That is start from just from the Haryana border after this, after Gurgaon there is a link for that. And it is totally a new alignment, a green alignment. So the road is designed with international standards. I feel that the speed will be more. But the problem is that, where I will request you, this is the time for the country that
in the family, 3 members are there, and the number of the car is 6 to 7 in the family. That is a big problem. No parking. Delhi, people are making big bungalows, but don't make any parking, because our roads are used for the parking of the people, particularly they are parking the car on the roads. So this is the time that we need to have public transport system on electricity. Now my idea is, I am working on that. From this Dholakua up to Manesar, we are making that sky bus. The Doppelmayr is the company, they have already double-decker bus in the sky in Philippines of capacity of 200 people. So ropeway, cable car, funicular railway, public transport, electricity, making luxury coaches. Now just 15 days before, we have started launching one double-decker electric bus in Mumbai. And now we have a lot of electric buses from Delhi to Simla, Delhi to Chandigarh, and we can make luxury buses. Even in public transport also we can make the air-conditioned luxury buses with business class. Then people will prefer to go by public transport. Then it can be a good thing for the country. Everyone want to use car. And one person going with one car, having capacity of 4%, 5%. So this is a problem. Somewhere we need to encourage public transport in the country. Without that, we cannot resolve this problem of pollution and particularly the problem of road accidents, because we have limitation on the road. Then we have to develop waterways. I always telling the people when I was Minister of Shipping and Ports that going by water, for example, the cost is 1 rupees, going by railway is 6 rupees, and going by road is 10 rupees. So we need to reduce the logistic cost. Now just 3 days before in Pune, I launched truck on LNG. So in place of 100 rupees of diesel, there will be only 40 rupees for LNG. So this type of new technology, new innovation, new research in automobile sector, using lot of new technology for mass rapid transportation and using electric as a fuel, it can be a good alternative, and we are moving towards that, which can be very, very important. It is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. We are making 165 cable car, ropeway and funicular railway proposal is already cleared in my ministry, and we are in process of starting the project now. In Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamunotri, everywhere, we are now connecting from ropeway and cable car. Then it can be easy for the people, so there will be no traffic jam. No, but the fact is that this problem of having multiple cars in every household is a reality. And despite the availability of public transport, very few people like those sitting here have actually moved to public transport. A lot of these challenges are now about changing societal behavioral norms to make that transition happen. How do you hope to achieve that? You can take a horse to the water, you can't make the horse drink the water. I'm making first example in my constituency in Nagpur. I'm making broad gauge metro. The metro on broad gauge, and actually the speed of the metro is 140 kilometers. And we are making metro from Nagpur to Amravati, Nagpur to Gondia, Nagpur to Chindwara, Nagpur to Baitul, Nagpur to Chandrapur and Gadchiroli. And my idea is just like private buses, there will be private metro. We have already finalized all the agreement with the railway ministry using the broad-gauge railway track. Now I'm giving you the example. For making metro in Mumbai and Delhi, the cost is 350 crore rupees per kilometer. And my metro's cost is only 2 crore rupees per kilometer. There will be business class and economic class. That's because you're on broad gauge. Huh? That's because you're on broad gauge. You're using existing. Yes, we are using the same network of the railway. Same stations, same signal system, same railway. So there will be no problem. So now Nagpur to Amravati, the Mercedes car or a good car is now taking 2.5 hours. And now by this metro, it will be 1 hour, 30 minutes, 20 minutes, because the speed is 140 kilometers. And every station, there will be 1 business class and 5 economic class. But it's good. There will be internet, TV, everything. Just like aviation, all type of facility will be there. And people will prefer to go by that because the time they can save and the fuel cost also they can save. So to give more comforts to the people for public transport,
that can be really most important thing for the country, by which we can reduce the number of vehicles on the road. But the flip side from left-leaning economists on an argument like this, or for example the bullet train project, is that this serves the purpose of the rich. India needs infrastructure for the poor. When you talk about building out these coaches, business class coaches, they say Gadkari ji, Modi ji, they have these ideas, these grand ideas like the bullet train. These are for the rich Gujaratis. The poor people, this is not the kind of infrastructure India needs. That's where your government should be focusing. तुम्हारी 100% बात गलत है. मैं नाम नहीं लेता हूं. दो भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक मेरे मित्र हैं, उनको मैंने कहा कि यू आर कॉस्ट सेंट्रिक, यू शुड बी क्वालिटी सेंट्रिक. कोई भी गरीब आदमी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं खरीदता, कलर टीवी खरीदता है. और जैसे उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल दी, आज उनका मार्केट में सेल 5% बढ़ गया. हर आदमी छोटी भी गाड़ी लेने वाला अब एयर कंडीशन गाड़ी लेता है. एक समय मैंने एक निर्णय किया था कि ट्रक की केबिन एयर कंडीशन होगी. सब लोग आए हैं कि ये करने से कैसा नुकसान होगा, कॉस्ट कितनी बढ़ेगी. मुझे पर इतना प्रेशर लाया, आखिर मैं विड्रॉ हो गया. मैंने उनको कहा 14-14 घंटे वो चलाता है, उसको एसी नहीं चाहिए 45 डिग्री पर, तो उसका विरोध किया. अब जैसे ये कंपनी आई, वॉल्वो आई, बाकी सब आए, अब उनके कारण अभी आपको एक अच्छा उदाहरण बताऊं. मुंबई से पुणे वॉल्वो बस शुरू हो गई, तो पहले इसका विरोध हुआ, स्टेट ट्रांसपोर्ट सबने किया है. अब मुंबई और पुणे हर आधा घंटे में वॉल्वो बस छुट्टी है. अब एसटी ने भी, स्टेट ट्रांसपोर्ट ने भी वॉल्वो खरीदी की और उन्होंने भी अपना ट्रांसपोर्ट सर्विस चालू कर दिया, क्योंकि लोगों को अच्छी सुविधाएं चाहिए. ये बिल्कुल आप गलत कह रहे हो. लोग कंफर्ट चाहिए, गरीब आदमी को भी चाहिए, और वो इफ यू आर रेडी टू गिव गुड सर्विसेज, पीपल आर रेडी टू पे फॉर दैट. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जो लेफ्ट लीनिंग इकोनॉमिस्ट हैं वो इस तरह का आर्ग्यूमेंट देते हैं. प्लस मैं देख रहा हूं दूसरी बात गडकरी जी कि आज आप जो भी बोल रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे, आप जवाब हर सवाल का बहुत बच बच के दे रहे हैं. अभी नाम लेना है तो टाटा और आनंद महिंद्रा दो थे. मैंने उनको कहा कि आप, ये एक जमाना था कि मैंने बोला आपके गाड़ी में हॉर्न छोड़कर सब बजता था. वो जीप में मैं पूरी जिंदगी उसमें पॉलिटिक्स में उसी पे झंडा लगा के चलती थी, हाथ पैर दर्द होते थे. मैंने टाटा साहब को कहा, साहब ये आपका लैंड रोवर इतना बढ़िया गाड़ी, उसी के बेस पर इंडियन मॉडल बनाओ ना, क्वालिटी सुधरो. लोग अब देखो, आज उनके शेयर बढ़ गया. अभी मेरे पास लोग आते हैं टाटा की इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए, यही बैठकर तुम्हारे जैसे लोग मुझे पूछते थे कि इलेक्ट्रिक पे आएगी, फिर गाड़ी बंद होगी तो क्या होगा, फिर चार्जिंग क्या होगा, 50 सवाल पूछते थे. यही होटल में मैं दे चुका हूं. अब टाटा की और इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी एक साल नहीं मिलती, लोग बोलते हैं गडकरी जी पत्र दो, आउट ऑफ टर्न गाड़ी मिलनी चाहिए करके. इलेक्ट्रिक स्कूटर, अभी वो इलेक्ट्रिक स्कूटर इतनी पॉपुलर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा पॉपुलर, इलेक्ट्रिक ई कार्ड पॉपुलर हुई. मैंने ये मेरे लाइफ में सबसे अच्छा काम किया कि 70 लाख लोग, आदमी को ढोने का काम करता था. आज मैं वो ई रिक्शा आई, ई रिक्शा पे नहीं रुका, पानी पूरी वाला, चाइनीज वाला, वो भी गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठ के रोड पे लगाता है और धंधा कर रहे हैं. टोटल सिनेरियो बदल गया. देखिए, लोगों की एक बात है कि अगर आप उनको क्वालिटी दोगे तो लोग पेमेंट करने के लिए तैयार है, कोई प्रॉब्लम. When you were pushing for electric mobility initially, it seemed an idea which was ahead of its time in India. Now, not just the Tatas, but even the Mahindras, the Volvos, all of them are moving very quickly to electric mobility. When do you see the sales of EVs overtaking ICE engines, where you think that conventional fossil fuels will look like the minority sale in the segment and electric mobility will take over? देखिए, ये समुंदर है, ये डीजल पेट्रोल का समुंदर है. हम में जितना दम हो, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, एथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, हम कितना भी लाएंगे. आपको पता है केवल ये जो टावर है आईटी के, ये 4000 करोड़ लीटर डीजल फूकते हैं जनरेटर में. अभी मैंने किर्लोस्कर के पीछे लगाकर पहला जनरेटर 100% बायो इथेनॉल पे बनाया, मैंने अपने घर में लगाया, और मैं उसको अभी लोगों को बोल रहा हूं, ये लो. आपको एक बता दो, ये फ्लेक्स इंजन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा,
कि टोयोटो अगले अभी 28 तारीख को इसी महीने में मैं फ्लेक्स इंजन की उनकी कैमरी करके गाड़ी लॉन्च कर रहा हूं मेरे यहाँ। वो गाड़ी ऐसी है कि 100% पेट्रोल के बजाय 100% बायो इथेनॉल पे चलेगी। अब पेट्रोल का रेट 120 रुपए लीटर, इथेनॉल का रेट 60 रुपए लीटर, और वो गाड़ी जो इथेनॉल चलेगी उससे 40% बिजली मुफ्त में तैयार करेगी। तो आपकी पेट्रोल की कॉस्ट आएगी 25 रुपए लीटर। और कल अगर आप मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां, टोयोटो, हुंडई, ये अगर आपको 25 और 30 रुपए लीटर पेट्रोल के कॉस्ट में अगर पुराएगी तो आप लेना ही है। पूरा दिल्ली का पोल्यूशन कम हो जाएगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा, और पूरा जो फ्यूल हमारे किसान तैयार करेंगे, ये मैं कितने दिनों से कह रहा हूं, और ये अभी दूर नहीं है। अभी मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है। आज एक्चुअली मैं हाइड्रोजन की गाड़ी में आने वाला था, तो उसको भरने के लिए वो फरीदाबाद जाना है, तो हाइड्रोजन कम है। ये देखिए, यही तो प्रॉब्लम है। आपको अगर हाइड्रोजन नहीं मिल रहा, आपको फरीदाबाद भेजना पड़ रहा है, तो यहाँ जो लोग बैठे वो सोचेंगे अरे बाबा इसलिए तो नहीं लेने का ना लफड़ा। अभी आपको एक बात बताता हूँ, हाइड्रोजन आया ही नहीं। देखो 3 टाइप के हाइड्रोजन है। कोल से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो पानी से और ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। मेरी आइडिया क्या मैं आपको बताऊं, मैं किसान हूं, इथेनॉल और ये सब, मैं किसानों को अन्नदाता के बजाय ऊर्जादाता बनाना चाहता हूं, क्योंकि गेहूं चावल मक्का लगा के कुछ होता नहीं। तो मेरा सुझाव ऐसा है कि जितनी नगर पालिका, महानगर, आपको एक अच्छी बात बताता हूं। मैं नागपुर में जैसे टॉयलेट का पानी 7 साल के पहले बेचता हूं नागपुर में। कैन यू इमेजिन, टॉयलेट का पानी बेचकर हमको 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे, 300 करोड़। और अभी मथुरा में हमने एक 80 mld स्लज, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, ये इंडियन ऑयल के बाजू में उसको हमने रिसाइकलिंग किया, पानी को इंडियन ऑयल को देते, वो 20 करोड़ देते। त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने काम किया, पूरा हाइब्रिड एन्युटी में वो प्रोजेक्ट हो गया। मेरी कल्पना ये, जिसको आप प्रोपोगेट करो, कि किसान अपने कुएं से पानी निकालेगा, वो पानी को वो साफ कर लेगा, उधर एक अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फूड ग्रेन के लिए गोडाउन डालेगा, उसके ऊपर रूफ टॉप सोलर डालेगा, क्योंकि 70% कॉस्ट इन ग्रीन हाइड्रोजन इज पावर, और वो पावर से 1 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर है। अभी मैंने एक फैक्ट्री ओपन की कर्नाटक में, वो इलेक्ट्रोलाइजर से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। फिर उसको कॉम्प्रेस करने के लिए जनरेटर 100% इथेनॉल पे होगा, 60 रुपए लीटर की, क्योंकि डीजल 110 रुपए है, और उसको करके वो गाड़ी में भरेगा। तो रोड पर ही किसान ही अपना पंप लगाएगा, तो ट्रक, बसेस, कार। अभी 3 दिन पहले आपने पढ़ा होगा, जर्मनी में एक रेलवे 1000 किलोमीटर हाइड्रोजन पे चली, हवाई जहाज चलेंगे। तो ये दिस इज द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, और ये इंडिजिनियस है। और ये हमारे यहाँ अभी टोटल हमारे पावर बास्केट में 38% पावर सोलर है, और उसकी कीमत $2.40 यूनिट आई है। मेरा सपना है कि $1 पर 1 kg ग्रीन हाइड्रोजन होगा, ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं, और जिसमें से एक गाड़ी 450 किलोमीटर चलेगी, यानी 80 रुपए में 450 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। कौन नहीं लेगा? और क्यों ये पोल्यूशन करना पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल लाकर? ये दूर नहीं है। देखिए आपको मैं बताऊं, आप मुझे तो 10 साल से जान रहे हो, हर बार मुझे यही प्रश्न पूछने वाले आप जैसे आपके मित्र ही थे, कैसे आएगा इथेनॉल, इलेक्ट्रिक कैसे आएगी, बंद पड़ी तो कैसा होगा, चार्जिंग होगा तो कैसा, दुनिया भर के प्रश्न किसी और स्वाभाविक लोगों के मन में थे। अब है कोई प्रश्न? किसी की इलेक्ट्रिक स्कूटर रास्ते में बंद पड़ी है, किसी की कार बंद पड़ी है। अब तो ऐसी स्थिति है कि आपको मैं बताता हूं, आप पहला काम करो, आप 25,000 रुपए पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हो, आपकी जो भी गाड़ी है आप निकाल दो, और 2,000 रुपए पे आ जाओगे, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लो। आपके घर में रात को चार्ज करना, आप ज्यादा से ज्यादा 50-60 किलोमीटर रोज चलोगे, घर में रोज चार्ज होगी गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास अच्छी क्वालिटी की लग्जरी गाड़ी है इलेक्ट्रिक की, मैं तो अभी पेट्रोल डीजल के गाड़ी में बैठता ही नहीं, आप भी ले लो। आपने रूल बना दिया? हाँ। नहीं, पर आपने लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि आप ये जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स है उनसे बात करोगे। कुछ इंसिडेंट्स आए थे जिसमें जैसे स्कूटर है किसी का, उसमें आग लग गई इलेक्ट्रिक इंजन में, उससे लोग काफी चिंतित भी हो गए। उस सेफ्टी के एस्पेक्ट को आप कैसे देख रहे हैं? आपके हिसाब से क्यों हो रहा है, और अगर इसको रोकना हो तो क्या करने की जरूरत? देखिए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आते हैं। उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड्स निश्चित नहीं किए थे। अभी हमने इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स ई बैटरी के लिए तय किए। अब लिथियम आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी, जिंक आयन बैटरी,
अब इसको बदल के ये फरीदाबाद में इंडियन ऑयल ने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी लाई। अब लगातार ये प्रयोग, इसके स्टैंडर्ड्स पक्के हो रहे। तो शुरुआत में ऐसा कुछ होता है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम आते हैं, लोगों ने अपनी गाड़ियां भी वापस ली। अब हमने उसके स्टैंडर्ड बनाने के बाद अगर कोई गड़बड़ होगी तो हम उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। पर मुझे लगता है अभी ऐसे एक्सीडेंट नहीं होंगे, उसके स्टैंडर्ड्स हमने तय किए हैं और कुछ लोगों को हमने फाइन लगाया, गाड़ियां वापस लेने के लिए उनको बाध्य किया। ये एक स्टार्टिंग प्रोसेस है, टीथिंग ट्रबल है, थोड़ा समय होगा। पर अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी में मैं एक गाड़ी अब 3-4 महीने चला रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी नहीं बंद पड़ी। You're always known to be a minister who thinks out of the box. Given the fact that the Indian economy is bouncing back or attempting to bounce back after the pandemic on account of the slowdown caused by the Russia-Ukraine war, the tensions between China and Taiwan, what, Minister, are your out-of-the-box ideas at this moment that you think if they were implemented, they could help the Indian economy grow at a faster pace? Actually, frankly speaking, whatever the out-of-box idea, I'm talking from last 30 years, majority cases there is a success story. So my suggestion is for ethanol, for electric, for green hydrogen, for new technology, I always telling to people two philosophies. One is innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future. And the second, my philosophy is about waste to wealth. I am telling to the people, no one is waste, no person is waste. It is depending upon the appropriate leadership. It is depending upon the vision of the leadership that any material, any person can change waste to wealth. So I am very much confident about it that our people are very competent. The young talented startup in India, we are the country where we have the highest young talented engineering power available in the world. And people are doing excellent jobs. So this is the time that knowledge as a power, we can convert India into a super economic power. And already Prime Minister is talking about it, about science and technology and research. So this is the most important thing and where we should give highest priority for research and development. And I am confident the way in which our IITs are doing excellent jobs. Can you imagine? Two-wheeler manufactured in India, Bajaj, TVS and Hero, they are exporting their 50% of production to abroad. Now the volume of Indian automobile industry is 7.5 lakh crore. You take it from me. After end of 5 years, the industry size will be 15 lakh crore and we will be the #1 manufacturing hub of automobile industry in the world. This is the potential we have got. All big brand, ekada chhod do, all are present in India. And do you know that? Everyone, either it is Suzuki, either it is Hyundai, it is Toyota, they are exporting their cars from India to abroad. So this industry is giving maximum revenue to the state and central government, GST, #1. This industry creates maximum employment potential in the country. And by scrapping policy, it is an integrated approach of the government that there will be aluminum, copper, steel, plastic, all recycling material will be available with a low cost. And by which 100% we will achieve that goal. So everywhere you should think about futuristic planning. And you should think for 25, more than up to 50 years. And I always tell it to the people, कि आप आंखें दान कर सकते हो, आप विकास की दृष्टि दान नहीं कर सकते. Lack of appropriate vision is the most important thing. और the new talented young people, उनके द्वारा ये हो सकता है. अब इसके तुम्हारे ये सवालों के कारण मैंने खुद प्रयोग करना शुरू किया. और राइस स्ट्रॉ है ना, परली, मैंने उसके ऊपर बायो सीएनजी निकालकर अपना ट्रैक्टर कन्वर्ट किया. मैं खुद इथेनॉल बनाने का मैंने अपने उसके हमारे एरिया में चालू कर दिया. अब मैं ग्रीन हाइड्रोजन पे मैं अपने टॉयलेट के पानी को साफ करके कारपोरेशन में एक पायलट प्रोजेक्ट डालने की कोशिश कर रहा हूं. तो मैं आपको ये कहूंगा कितनी वेस्ट अवेलेबल है. अभी आपको एक टायर थे, मालूम है आपको, ये जो रबर टायर, तो एनवायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने इंपोर्ट वेस्ट टायर को स्टॉप किया था. मैं गया, मैंने कहा अलाउ करो. अब पूरे वर्ल्ड का भंगार हमारे देश में आने दो, गाड़ियां आने दो,
इससे हम लोग आयरन ओर और स्टील बाहर से लाने के बजाय हम लोग रॉ मटेरियल लाएंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे। अभी वो टायर से रबर निकलता है, 10% रबर बिटुमेन में ऐड करने के लिए हमने परमिशन दे दी, रबराइज बिटुमेन रोड बन रहे हैं। फिर जो वायर निकलती है उससे स्टील फाइबर निकलता है। और मैंने सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी अभी लाई जो मलेशिया और सिंगापुर से, कि ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू पियर होता है, जब ये हॉल बना है ना, एक पिलर और वो पियर, या मेट्रो बनती है, ब्रिज बनता है, तो 30 मीटर होता है। अब उन्होंने क्या किया है कि ये जो बनता है पियर, इसके ऊपर ये जो आड़ा वाला बीम है, ये उन्होंने स्टील फाइबर में कास्ट किया। अभी पुणे में एक फैक्ट्री वो साल भर के लिए बुक हो गई, और उसके कारण हमारी कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन 40% कम हो गई। अब मेट्रो के 2 पियर जो है वो 30 मीटर पे नहीं 120 मीटर पे होंगे, और उसका कास्टिंग जो स्टील फाइबर में होगा, ये जो टायर से जो वेस्ट वायर निकल रही ना, उसका फाइबर निकालकर वो जाएगा, तो कॉस्ट में 30 रुपए किलो हो जाएगा। अब लोहा जाएगा 70 रुपए किलो और 30 रुपए किलो, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इंप्रूव हो जाएगी, और ये वेस्ट मटेरियल वेस्ट टू वेल्थ वाली बात, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। पर एक प्रॉमिस ऐसा है आपका जो आपने पूरा नहीं किया। जब आप मिनिस्टर बने थे रोड ट्रांसपोर्ट के, आपने कहा कि देखो ये मॉनसून के बाद हर बार रोड टूट जाती है, मैं जो कंस्ट्रक्शन माफिया है, उसके रोड कंस्ट्रक्शन माफिया उसको मैं फिक्स कर रहा हूं, और आगे चल के ये नहीं होगा। जो मिलावट होती है जिससे बार बार रोड टूट जाती है, वो नहीं टूटेगी। अभी भी अगर आप मानसून का ट्रैवल करो, वो सड़कों पे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना रही है, उनमें भी कई में बहुत डैमेज हो रहे हैं। तो वो जो आपका प्रॉमिस था कि सड़कें ऐसी होंगी कि साल दर साल चलती रहेंगी, वो आप पूरा क्यों नहीं कर पाए? मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, कौन सा रोड खराब देखा आपने, मेरा नाम बताओ। नहीं, अब आप बोलोगे कि ये मेरा नहीं है, तुम उसका बता नहीं है, सकते। थोड़ी है। देखिए, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल हाईवे। अभी ये इतना रोड यहां से चलता है, ये मैंने बनाया, ये ढोलाको वाला मिलिट्री वालों की जगह लेकर कितना तकलीफ हुई। अब मुझे बताओ, रोड पे ट्रैफिक जाम है, पर गड्ढे है कहीं गुड़गांव तक। अभी ये काफी इसमें हमने कंक्रीट रोड बनाया। अभी मेरे हिसाब से एक नई टेक्नोलॉजी आई है, अल्ट्राटेक वालों ने मैंने हमारे, वो है व्हाइट टॉपिंग, कि बिटुमिन इसको निकालकर उसका लेवल वो सीबीआर टेस्ट करके उसके ऊपर 8 इंच का व्हाइट टॉपिंग सीमेंट करना। तो मैं पूरे मेरे शहर में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 550 किलोमीटर सीमेंट कॉन्क्रीट रोड है, गड्ढे नहीं है। अभी मैं मुंबई में पीछे पड़ा, तो अभी चीफ मिनिस्टर और मैं साथ में थे, पहली बार मुंबई कारपोरेशन ने 6000 करोड़ का प्रोग्राम लिया है। कमिश्नर चहल साहब ने मुझे बोला, आप बोलते थे सर, हमने कार्यक्रम लिया है, और पूरे बिटुमिन रोड को वो व्हाइट टॉपिंग में कंक्रीट रोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जहां ज्यादा बरसात आती, वहां कितना भी अच्छा तुम बिटुमिन रोड बनाओ, खराब हो जाता है। ये मुंबई गोवा कितना भी अच्छा बनाओ, इतना पानी आता है कि बस। बाद में समुद्र के नजदीक स्टील, आप कुछ भी करो, रस्टिंग होता ही है, तो स्टेनलेस स्टील यूज करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में बहुत सी बातें बदल रही है। अब स्टेट हाईवे, अभी नेशनल हाईवे का नेटवर्क, स्टेट हाईवे का नेटवर्क, अब दिल्ली में डीडीए के रोड, दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन के रोड, आप म्यूनिसिपल कारपोरेशन और डीडीए के रोड पर घूमते हो और गालियां मुझे देते हो, तो कैसे होगा? अब मैं लगे तो तुम्हारी गालियां उनको ट्रांसफर कर दूंगा, क्या ही फॉरवर्ड करूंगा। मेरे रोड पर आप जो इधर उधर के है, उसमें बताइए कहीं प्रॉब्लम होगा। We leave it over there. You came here, you've spoken from the heart as you always do. Mr. Nitin Gadkari, thank you so much for your time. Thank you very much. Namaskar.